जय माता दी आदेश नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस मेरा नाम है विशाल and this is 592nd episode of live analysis. So we are very close to completing the 600 mark, and I could not take live session for last 2 days because I was traveling. I was busy. So today I just thought of taking out some time and do the live session because tomorrow is a crucial session. So good evening, namaskar. चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, and you can also join the Instagram and Telegram links. They are given in the description box, and all those who are interested to register to join for the next training that is scheduled on July 10th, you can WhatsApp on the number given, and you can join as soon as possible. Once you join, you will be added in our student Telegram group support for a period of 4 months. So join as soon as possible to benefit maximum from the group support. So let us start today's session. I think we have decent number of people joining us live right now. ऑल राइट, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. All right, chaliye. So let us start the session. So right now we have mixed global cues. European markets are looking bearish, and the German market is down. French market is down. More or less approximately by 1%. U.S. market is also trading flattish. S&P 500 is off by 30-40 points from the day high, and Nasdaq is trading flat. So more or less we have a bearish bias. Right now we have a bearish global equity market as of now, not strongly bearish but certainly not bullish either. So we have a soft tone right now, and tomorrow morning this tone can be highly bullish or highly bearish, so we will have to see that. Now let's talk about the S&P 500. So right now this market, this market must stage a big rally, because what is happening is that we made a good bottom over here, and we have bounced back also. So we have bounced back also after making this drop. We have bounced back, but then there is no follow through. We need to take out some resistances, and preferably this big bearish candle over here. So if you can see, we are still trading in this big bearish candle, so thereby making all this activity a part of an inside bar. So for bullishness to prevail, we must certainly take out this resistance, take out this prior swing bottom over here, take out this immediate hurdle over here, and that would set the tone firmly in the bullish camp, and S&P 500 can thereby stage a very nice rally. And once the US market are in bulls camp, then certainly all the other markets will also follow, because all these markets are pretty much very oversold. So they just need an excuse to come back. So US market must rally. Now one thing which we need to keep in mind is that if S&P 500 again goes lower, and if it is making again a lower low, then this is certainly not good. So S&P 500 should not go lower. S&P 500 must start to take out these resistance areas, and it must rally. Once we are above this, then I think we are certainly very positive, and the first target will be just above the 4,000 mark, and thereafter we can go much higher. Yeah, so that's the update on the US market. Now let us have a look at the currency market. Because actually last although I was not there to take the live session, but we had very good time trading currency, and many of the group members, they have also traded the short trades that we took, and it was a fantastic week to trade the forex market. So we had we have traded GBP INR on the short side at least 3 to 4 times. So इसमें जो है हर बार हमें अब roughly 50 पैसे का gain हुआ है, and today also we gained profits in this. So GBP INR we traded on the short side multiple times. You have Euro INR, you have JPY INR, जिसमें
लॉन्ग में हमने कल एक बार एग्जिट किया था लॉस में, बट वापस उसे बाय कर लिया, एंड टुडे इसमें जो है 30 पैसे की वापस से प्रॉफिट हो रही है। लुकिंग एट द यूएसडी जेपीवाई, अगर इस तरीके से कल मॉर्निंग में ये ओपन होगा तो सर्टनली इसमें वापस से जो है पूरी तरीके से प्रॉफिट आ जाएगा। सो वी हैव ट्रेडेड द फॉरेक्स मार्केट क्वाइट वेल and almost with 100% accuracy except this JPY INR. Now looking at the current charts of say US dollars, US dollar right now it is still very much in the control of bulls. I don't see any weakness as of now. It's making a triangle and just above the previous swing high. So this is something which is bullish. Triangles are continuation pattern and they can break on the higher side. So US dollar abhi bhi dosto bullish hai, and who knows, probably one more high is coming in the US dollar. But then from a long term perspective, US dollar jo hai, it is somewhere close to make a short term to medium term top. So that's the picture over there. अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें, so I was bearish on the Euro USD again, and I will continue to hold that bearish view. Yes, it can go little higher. We have a scope to move till this level because this was the last support. This was the last breakdown area, so it can certainly inch over there. इस तरीके से, जिस तरीके से ये एक साइडवेज मूवमेंट करके धीरे धीरे यहाँ पे जा रहा है, okay, so it can do that, there is no harm, but then the long term resistances are coming back. So just like we had anticipated a short trade over here, it went into that supply zone, and then we got a huge drop. We are still रिपीटिंग दैट थिंग. सो यूरो आईएनआर पे जो है हम बेरिश है, राइट, और यहाँ से जो है हमें एक और ड्रॉप की उम्मीद है. सो वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल बिकॉज if it breaks the resistance then it can go higher also. So stop loss हम यूज करेंगे. अगर हम बात करें एनएससी पेयर्स पे, तो you see the entire range towards that 83 and 8350 is a shorting zone. So we are going to short in this zone. हम already short है, and I'm anticipating 81 and a half on the lower side. ठीक है, so इस तरीके से हम यूरो आईएनआर पे हम हमारी ट्रेड्स हैं शॉर्ट साइड में. नाउ इफ आई टॉक अबाउट ब्रिटिश पाउंड, तो इस समय ये सॉफ्ट चल रहा है. ब्रिटिश पाउंड में जैसा मैंने बोला कि हम काफ़ी रोटेशंस इसमें कर चुके हैं, एंड बहुत ही अमेजिंग इसमें जो है ट्रेड्स मिले हैं. So today also we booked on the short side. So जीबीपी आईएनआर जो है ये दोस्तों, ये वैसे तो शॉर्ट साइड ही है, ओके, बट राइट नाउ इसमें थोड़ा सा 50-60 पैसे का अप मूव आ सकता है. सो यू कैन कीप शॉर्टिंग जीबीपी आईएनआर टिल द लेवल ऑफ आई मीन यू कैन शॉर्ट व्हेनेवर इट गोज नियर 96 रुपीज. 96 से लेके 96 50, ये जो 50 पैसे का स्लैब है ये पूरा शॉर्टिंग स्लैब है, एंड यू कैन कीप 97 रुपीज एज अ स्टॉप लॉस. एंड डेफिनेटली अगर इसमें भी एक और वापस से एक और क्रैक आता है इस तरीके से, तो हमें जो है आराम से आपको 94 रुपीज एंड प्रॉब्ली जस्ट अंडर 94 ऑल्सो आपको इसमें मिल सकता है. सो 2 रुपए की इसमें जो है ट्रेड है. Similarly, if we talk about the USD JPY, then today it is giving a very nice breakdown. Yeah, so today it is giving a breakdown, trading below the previous swing high, and I like this price action because if we take a look at the higher time frame, the weekly charts, we have one day more to go, and the weekly chart is turning out to be a bearish pin bar. So let us see कल क्या होता है. It is sitting at a very good support 134.2 और approximately 134 जो है ये एक significant support है. बट अगर ये इस तरीके से कल ओपन होता है तो जेपीवाई आईएनआर में जो है प्रॉफिट्स होगा. नाउ जेपीवाई आईएनआर जो है इसे कैसे ट्रेड करना है, जैसा मैंने अभी 2-4 दिन पहले बताया था कि इट कैन ड्रॉप टिल 57.5, बट इट विल बाउंस बैक एंड वी कैन एक्सपेक्ट 59.5 रुपीज. सो इसमें कोई भी करेक्शन आती है 57.5 तक हमें बाय करना चाहिए, और टारगेट होगा हमारा 59.5, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 rupees gain that we are targeting, and you can keep say 57 rupees as a stop loss. So you can buy in this entire zone of say 58
टू 57.5, इस 50 पैसे में जो है हम बाई कर सकते हैं। एंड टारगेट होगा हमारा 59 रुपीज से 59.5। ठीक है, सो दैट्स द अपडेट ओवर देयर। बाकी अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात करें तो यस, पिछले 2-4 दिनों में जो है थोड़ा सा यूएसडी आईएनआर में कोई एक अपमूव आया था, बट अगेन आई एम नॉट टचिंग यूएसडी आईएनआर बिकॉज आई बिलीव इसमें जो है मोस्टली द आरबीआई इज एक्टिव टू मच, एंड you are not getting a free hand to trade this currency as of now. So USD INR में व्यू अभी भी थोड़ा सा बुलिश है, बट देन कोई आउटराइट मूव इसमें आ नहीं रहा है। So that's the update over there. Now let's very quickly have a look at the commodity markets and then we will discuss the Nifty and Bank Nifty. क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल इस समय जो है मिक्स्ड है, एंड 8,000 is a very good support. I think crude is making an inside bar today, so tomorrow we can get a very nice long trade. So crude में what we can do is you can trade via the option market. You can buy the 8500 call. I think it's looking nice over here. So crude is sitting at a very good location. We are making an inside bar, so इसमें कॉल ऑप्शन के थ्रू जो है हम ट्रेड कर सकते हैं। जब तक क्रूड कल के बॉटम के नीचे नहीं जाता है, क्रूड कैन वेरी इजीली स्टेज बाउंस बैक टुवर्ड्स द 9000 लेवल। सो ब्रॉडली स्पीकिंग 8000 से 9000 के रेंज में क्रूड को मैं देख रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से अपने ट्रेड्स को बना सकते हैं। फ्यूचर्स में ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं है, overnight especially रखना it is very risky, so try to play through call options. So bullish on crude oil 8000 to 9000 का रेंज इसमें मैं देख रहा हूँ। Now let's talk about copper. So copper has finally broken down very badly. Copper आज दोस्तों 30 रुपए डाउन है, and if you remember in last few weeks I was very bearish on copper, और अभी थोड़े दिन पहले जो है लाइव सेशन में हमने आपको बताया था कि why copper has peaked out and why I am expecting a very sharp down move to come in the copper market, and today it is down by almost 30-35 points. So today it is trading below 700 mark level. It has broken down all these supports, 705, 710 सारे supports जो है copper में टूट चुके हैं, and this doesn't bode well for the metal stocks also. So copper is bearish. Now any up move that comes in copper, it will be kind of sold off. So you have a very heavy resistance now nearing the 720 and 725 कॉपर पे। आपको याद होगा कि मैंने जो है काफी एक बहुत लंबा एक आपको 560 और 520 के आसपास का एक टारगेट दिया था, and the target was based on the long term top that is made in the copper. So we already have a made a top over here, and we are in the lower high lower low structure, and we have validated that. So today also we have made a lower low in this format. So copper is certainly under bear market, and I will expect copper to come back all the way till 500 and 520 zone. इस समय ये 700 है, यानी 200 रुपए की फॉल जो है हम इसमें और अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कॉपर में वी टर्न्ड बेरिश अंडर 785, एंड सिंस देन इट हैज मूव्ड ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। नेचुरल गैस की बात करते हैं। सो नेचुरल गैस इज डाउन बाय 10%, और नेचुरल गैस में इस समय कोई भी बुलिश व्यू नहीं है, इट्स सर्टेनली बेरिश। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आखिरी होप जो नेचुरल गैस में था दैट वाज हियर, एंड विच गॉट ब्रोकन आउट। सो एनजी इज बेरिश, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग एनजी टू रीच ऑल द वे टिल 485। इनफैक्ट 485 अभी ट्रेड हो रहा है लाइक 465 के आसपास। सो एनजी में अभी कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं करना चाहिए। आई थिंक एनजी इज बेरिश, एंड एनजी कैन गो ऑल द वे टिल 420 ऑल्सो टू रीटेस्ट द 233 मूविंग एवरेज। सो दैट्स द अपडेट ओवर देयर। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो बेरिशनेस हमारा जो है परसिस्ट है। गोल्ड में आपको याद होगा कि मैं बेरिश हूँ, एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन 49,500 एंड देन 48,000 एज अ टारगेट ऑन गोल्ड। सो बिलो 51,600 गोल्ड इज बेरिश। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आप सबको पता है 56,000 का टारगेट मेरा इंटैक्ट है, एंड आई थिंक सिल्वर इज लूजिंग ग्रिप। सिल्वर कैन वेरी इजली if it breaks the 59,000 level tomorrow, silver is going straight away 56,000. So all these things are working very well. Now let's have a look at the Nifty and the Bank Nifty market.
ऑल राइट, सो हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। और इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने से पहले दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। वी आर एंटरिंग इनटू अ वेरी एक्साइटिंग टाइम बैंड। लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सो चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सो दैट इट मोटिवेट्स अस टू do the live sessions. And those who have joined late, let me just inform you कि next जो training है that is scheduled on July 10th, uh, and if you are interested you can join as soon as possible. चलिए, so what's up with the Nifty and Bank Nifty? So आज जो है, हालांकि मैं पिछले 2 दिन से थोड़ा सा बाहर बिजी हूँ, बट टुडे आज आई थिंक ग्रुप मेंबर्स ने काफ़ी इंजॉय किया निफ्टी के ट्रेड्स में, बिकॉज आई हैव बीन मेंटेनिंग माय बुलिश स्टैंस सिंस लास्ट 3 to 4 days. एंड अर्लियर व्हाट हैपेंड इज वी वर बुलिश अबाउट दिस लेवल, यू कैन रिमेंबर। हमने जो है वीकली मॉब लेवल आपको सजेस्ट किया था, एंड ओवर देयर वी वेंट 300 पॉइंट्स। देन देर वॉज अ करेक्शन नेक्स्ट डे। और कल जो है, अगेन कल तो मैं लाइव सेशन ले नहीं पाया था, बट मेरा व्यू बुलिश ही था, वेरी इजी इट वॉज टू प्रिडिक्ट। एंड देन यस्टरडे अगेन वी, sorry, today again we got a up move, right? Now here there was the gap resistance, this was the gap resistance over here, unfilled gap. And then suddenly market collapsed. Market, there was a big sharp decline, and this is where I messaged that we have to buy, and Nifty और Bank Nifty दोनों पे जो है हमने buy call दिया, and then it zoomed like rocket. तो exact bottom पे जो है आज जो है call दिया Nifty और Bank Nifty का, and both the indices they shot up. And definitely group members can vouch for that if you are watching the live session. Now, having said that, what is the situation as of now? So situation is little bit tight, because the global cues are not supporting. So at this instance, right now, our markets are sitting at a very good support. That is absolutely clear that we have a very good support based on long term analysis, but we need to create that follow through. So we need to create that follow through, which is not coming. We already we back tested this support zone turning into resistance. So we need to reclaim 15,625, 650, right? So we need to move to those levels. See, group members जो है ये काफी आज correct. Yeah. So we need to move above the 15,625 level on a closing basis. It's very simple. So we had a double bottom structure over here, और वंस हम इसके अंदर एक बार आ जाएंगे तो ये काफ़ी हेल्दी होगा. Now tomorrow is Friday, and we have made this candle which is looking pretty much to this candle. I mean, if you go and see how this candle was made, the weekly candle was made, you will see that during the week it looked somewhat similar, and then there was a rally into the closing, and that made this double bottom a very credible, a very bullish double bottom. Now कुछ बातें जो है ना यहाँ पे साइकोलॉजिकल बातें, ये मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज ये आई थिंक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा आने वाले दिनों में. कल का जो प्लान है ये बड़ा ही सिंपल है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव, सम साइकोलॉजिकल things are there which we need to understand. Now see, if you look at the line chart, we have a very easy market. We are making a sort of a cup and handle pattern over here, and once we take out this closing high, which was nothing but I think 15,620, 630, yes, correct. So once we are above this 15,630 on a closing basis, that completely negates the resistance which is coming, and that gives us a very easy free way to move all the way towards 16,500 level, राइट. सो हमें जो है इस लेवल पे ध्यान देना दोस्तों कि बाजार अगर 15,630 इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग आ जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी, एंड सर्टेनली मार्केट विल बी इन अ पोजीशन टू स्टेज दैट रैली हायर, और हम जो है 16,200 और 16,500 इसे हम टेस्ट कर लेंगे विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज. इट विल बी अ sharp and a fast rally because of the
texture that you had on the left hand side during the correction. You also have this entire gap to be filled, so that is why market will be in a position to take out these resistances very easily. Now, why tomorrow is crucial? Tomorrow is Friday, and the global cues are not supportive, and this market has tried almost three times to move higher. So we are at a very good location. We are in a very good position, in fact. So कल का दिन अगर दोस्तों bullish turn होता है तो it will be very big bullish. And tomorrow, if we fail to capitalize on this flag structure, then we are again going to fall back, and that fall can be quite big. Okay, and tomorrow is any which ways the time cycle date of 24 जून. So कल के दिन जो है बड़ा मूव होना बहुत ही नेचुरल सी बात है. अब हम डिस्कस करते हैं कि कल के लेवल्स क्या होंगे, कैसे बाजार को हमें डील करना है कल. ओके, सो लेट अस डिस्कस द लेवल्स. Now, if I open the Nifty chart, if I open the long-term Nifty chart, Nifty is doing its best. Nifty ने जो है काफी मेहनत की है अपने आप को इस बेरिशनेस से निकालने के लिए, बट वी नीड दैट फॉलो थ्रू. ओके, हमें जो है इस मेजर एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाना है, विच इज अगर मैं एक बड़े लेवल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो अगेन दिस विल बी अराउंड 15,725. So once we are very well inside this, I think then the markets are certainly set to go to 16,200 level. देखिए कल के बाजार की बात हम करते हैं, तो कल किस तरीके से हम मार्केट को डील करेंगे, लेट अस सी. फॉर टुमारो the mob level will remain 15,630. Okay, so till we are above this, till we are above 15,630, market is definitely bullish, and the higher targets will certainly come. So make or break level for tomorrow's session will be 15,630, and above this market is definitely bullish. और हमारा जो पहला टारगेट है वो हो जाएगा 15,925 का, एंड सेकंड टारगेट विल बी 16,100. On the lower side, if we struggle here, we might make a rising wedge structure. Okay, we just go higher and again drop like this. Any kind of failure, any kind of rejection from the 15,630 zone will invite the bears again, and this will be considered as a kind of a failed breakout in terms of the structure over here, which is a channel, you can say. So it will be a kind of a rejection, a failure to sustain above the channel, a failed breakout of the channel. It will be a failure to take out this resistance level, so that will be a failed move, and that will bring back the bears again, and you will see a hammering, thereby triggering a down move towards 15,450 as the first target, and secondly we can go all the way till 15,250. So नीचे साइड में 15,630 के नीचे we have 15,450, and you have 15,250 as the downside targets, out of which 15,450, 15,400 are very very sure to come. नाउ ये तो हो गया लेवल्स की बातें, ये हो गई पूरी स्ट्रक्चर की बातें, बट व्हाट अबाउट द सिचुएशन? सो इफ देयर इज अ गैप अप ओपनिंग, दैट इज अ वेरी गुड साइन. गैप अप ओपनिंग जो है ये अच्छी साइन है, एंड ट्राई टू बाय दैट गैप, बट वॉच आउट फॉर मॉब लेवल. अगर मॉब लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, आपको ऐसा वीकनेस लग रहा है, इट इज ट्रेडिंग बिलो दी वी वैप, देन सर्टनली आप उसे एग्जिट कर दीजिए एंड लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. हाउएवर, इन केस ऑफ अ गैप अप ओपनिंग, आई वुड एडवाइस कि जब तक अच्छे से ये फेलियर और ये रिजेक्शन नहीं होता है, डोंट बी इन अ रश टू शॉर्ट द मार्केट, बिकॉज अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इज ऑलवेज बुलिश. एंड आप मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, राइट, 15 मिनट 20 मिनट, एंड देन डिसाइड योर ट्रेड. ऑन दी लोअर साइड, सपोज अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट दोस्तों, तब मार्केट जो है दिक्कत में है, एंड ऑन गैप डाउन ओपनिंग सर्टनली ये जो है या तो आप लॉन्ग मत करिए, या तो फिर ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगा. यू कैन शॉर्ट, एंड एनी काइंड ऑफ शॉर्टिंग दैट यू डू 15,630, ये जो आपका लेवल है ये आपका आखिरी स्टॉप लॉस है. ठीक है, तो चाहे आप कहीं भी शॉर्ट करो, इस लेवल को आप रेफरेंस में रखिए, ये आपका आखिरी स्टॉप लॉस है. अगर कल गैप अप खुलता है 630 के ऊपर, तो गलती से भी शॉर्ट नहीं करना है, बिकॉज दैट विल ट्रिगर ए ह्यूज short covering, and market will definitely cross 16,000 16,100 on a
क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, सो इस तरीके से ये जो है हमारी एनालिसिस होगी, हमारी प्रिपरेशन होगी। लेट अस सी व्हाट हैपेंस टुमारो। Structure and everything is looking good, but yes, the global cues, they are definitely not supportive, and tomorrow being Friday, we definitely need some support from the global markets. So for bullish perspective, we need a gap up opening tomorrow that would provide some cushion for the bulls, and that would help the market to stage some rally uh, based on the लाइन चार्ट। इफ यू सी ओवर हियर, एक और पर्सपेक्टिव मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर दोज लाइक हु यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज uh, the RSI is, this type of RSI structure is definitely bullish. Okay, so this is a bullish structure over here, and it's just a matter of time when we take out. So you need little support from the global cues, some positive news to trigger a upside move in the market. Things are looking good, बट यस वी आर अंडर रेजिस्टेंस। सो थोड़ा सा जो है हमें एक्सटर्नल हेल्प इस बाजार में इस समय हमें चाहिए। नाउ वन मोर थिंग बिफोर लाइक कीपिंग योर पोजीशंस फॉर मंडे, don't try to keep longs unless we are trading, or unless we are closing at or above the 15,680 level. Okay, so we need to close somewhere at दिस लेवल और अबव दिस लेवल। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। इट विल बी सेफ टू कैरी दी वीकली लॉन्ग्स फॉर मंडे। बट अगर इसके नीचे की क्लोजर है तो इट्स लाइक 50-50, सो व्हाई डू यू वांट टू टेक ओवरनाइट रिस्क। ठीक है, सो अगर इसके ऊपर होता है तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इट विल बी 1-2 एंड फर्स्ट ऑफ द थर्ड, सो दैट विल बी अ वेरी नाइस लॉन्ग ट्रेड टू कैरी फॉर मंडे फॉर दी 16,200 मूव। ठीक है, या सो दैट्स ऑल ऑन दी निफ्टी फ्रंट। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने, मैं समझता हूँ पिछले 4-5 दिनों से बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज द काइंड ऑफ रोटेशनल मूव दैट यू आर सीइंग इन दिस स्टॉक्स। अगर आज देखें हम तो रिलायंस ऑलमोस्ट 1.5% डाउन था। सो इफ यू रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट दी the Ritik stocks. So we have made a index of the HDFC, Reliance, and these counters. So if you look at the ऋतिक स्टॉक्स, हमने इसके बारे में क्या कहा कि दोस्तों इंडेक्स जो है मैनेजमेंट होगा, इंडेक्स मैनेजमेंट होगा, निफ्टी को गिरने नहीं दिया जाएगा, बिकॉज दीज स्टॉक्स दे आर डेफिनेटली दे आर हैविंग अ वेरी गुड सपोर्ट, एंड वन डे यू विल फाइंड एक कोई स्टॉक ऊपर है, दूसरा कोई स्टॉक नीचे है। सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेस। सो दे विल सर्टनली बाउंस हायर फॉर months. So because of this, the Nifty, it will keep finding support. So whenever Nifty dips, it will keep finding support and it should bounce, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई स्टॉक आ जाएगा इसको रेस्क्यू करने के लिए। सिमिलरली, टिल इट इज नॉट क्रॉसिंग अ सर्टन थ्रेशोल्ड, इनमें से कोई स्टॉक जो है गिरेगा, एंड दैट विल अगेन प्रोड्यूस अ डाउन मूव। So the overall, the Ritik stocks, the indexed heavyweight, they are suggesting that the index has pretty much bottomed, and it is the time for a counter move, right? And that is what this market is doing. That is why today also you got a intraday decline which was bought and it shot higher. सो आज रिलायंस ने जो है 2440, ये लेवल आपको याद होगा, मैंने काफी दिनों से दिया था, वो चीज जो है आज रिलायंस ने कंप्लीट कर लिया। बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे हम। सो बैंक निफ्टी पे इनसाइड बार है, वीकली इनसाइड बार है। टुमारो इज फ्राइडे, लेट अस सी कल का क्लोजर क्या होता है। ओवरऑल लाइन चार्ट जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आरएसआई प्रोफाइल जो है ये भी काफी अच्छी है, सारी चीजें बहुत सही है बैंक निफ्टी में। बट अगेन द प्रॉब्लम इज it is still not breaking some resistance. So if I open the long term chart, Bank Nifty has done very nice. We are, we were very oversold, and by slowly going sideways with a positive bias, we have come, we have traveled time wise, not price wise. So we are still trading in this black candle, which is not good. But so that is not good. But the good part is that if Bank Nifty
gets little help, then Bank Nifty can definitely blast higher. सो ये जो पूरा सिचुएशन है यहाँ पे कि हम अभी भी इस ब्लैक कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ये अच्छा भी है बुरा भी है। जिस साइड फॉलो थ्रू होगा फिर हम हाइंडसाइड में कह सकते हैं कि अच्छा था कि बुरा था। सी यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यू हैड a very big decline. Now if this structure, अगर आप चाहे इसे ट्रायंगल में कन्वर्ट करें या चाहे आप इसको रेक्टेंगल में देखें, whatever it is, if this structure doesn't break higher, automatically it will tank, automatically it will tank, and then you will have Bank Nifty at 31,700 level bare minimum. Possibly it can tank all the way till 31,000 level, and thereby completing this entire decline of 1 to 3 4 and 5. सो काउंटिंग पे मैं नहीं जाता, क्योंकि आप हर चीज को जो है आप काउंट कैसे भी आप कर सकते हो। वी आर नॉट इन दैट बिजनेस ऑफ एलियट वेव काउंटिंग, बट if the price action doesn't produces breakthrough, तो certainly फिर ये वेव काउंटिंग के सीक्वेंस को हमें ध्यान में रखना पड़ता है और ट्रेड हमें प्राइस एक्शन के थ्रू करना पड़ता है। सो राइट नाउ द बैंक निफ्टी इज सिटिंग एट अ वेरी गुड सपोर्ट, एंड अगर कल बैंक निफ्टी में फॉलो अप आता है तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो ध्यान में रखना है हमें कि अब अगर बैंक निफ्टी वापस से 32,650 के नीचे जाता है, इट इज नॉट good. It is not good for Bank Nifty, because in that case I expect Bank Nifty to go all the way till 32,000 and create a fresh low right now. ठीक है, and that might keep dropping till 31,700, 31,600 is not reached. सो हम कल कैसे ट्रेड करेंगे? सी कल का जो मैं लेवल बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड टुमारो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी। सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, we are going to keep this entire band as the support band. This is a very strong band of support, you can say, from 33,000 to 32,800, 200 पॉइंट का ये काफी strong support है. So how I would perceive is, the mob level for tomorrow's session, I would like to keep this entire band as a mob level. So there is no particular level. There is a band of this 33,000 to 32,800. However, I would like to keep 33,000 as the mob level, because it's Friday. So if we are slipping below the 33,000 strike price, you might see a writing over there and opening the window for lower levels. So कल के लिए दोस्तों जो mob level होगा, trend deciding level होगा, that will be 33,000 level. Above that, we are bullish and we should go higher. At bare minimum it should go 33,400 level. We need to take out this. अगर हम इसे ब्रेक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी. In that case we will also break this structure. It will be very fantastic actually. और आप थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आपको बैंक निफ्टी पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी आपको दिखाई देगा. सो ब्रेकिंग अबाउट 33,400, सो दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल लेवल. सो आप कह सकते हो कि ये 33,000 से लेके 33,400 ये एक कंजेशन जोन है, जिसमें से 33 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. सो 33 से हम बाय करेंगे 33,400 के लिए. 33,400 वंस टेकन आउट, आई थिंक बैंक निफ्टी विल बिकम अनस्टॉपेबल, एंड स्ट्रेट अवे हम जो है 34,000 के लेवल पे जाने वाले हैं. ठीक है, 33 के नीचे मैं समझता हूँ लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है. So avoid longs below 33,000, and downside में 32,500, that should be first target 32,500. एंड जैसा मैंने कहा अगला नेक्स्ट जो लेवल होगा वो हो जाएगा 32,000. सो कल जो है सिचुएशन के हिसाब से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना होगा. इट इज नॉट अबाउट लेवल, इट्स अबाउट वेयर इज इट ओपनिंग एंड व्हाट इट डज आफ्टर द ओपनिंग. सो इफ देयर इज अ गैप अप ओपनिंग, that is good, but it must cross 33,400, because if it is not crossing that 33,400 despite a gap up opening, it will bring one big down move towards 32,800 level, and then it might set the tone for bearishness. ठीक है, अगर कल गैप अप होता है और 33,400 को ब्रेक करता है तो इट विल बिकम अ ट्रेंड डे, एंड दैट विल बी एक्सेलेंट फॉर द बुल्स. ठीक है, सो थोड़ा सा कल ट्रिकी है बैंक निफ्टी, बट अगर आपने इसको ओपनिंग को रीड कर लिया, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल. एंड वंस अगेन, always use stop loss in trading. Tomorrow is Friday, and be little careful. Tomorrow is 24th of June, so we are definitely going to have a big move, wild move.
राइट नाउ आवर इंडाइसेस आर लुकिंग गुड, दे आर पॉजिटिव, सारी चीजें जो है बहुत सही हैं। थोड़ा सा पुश चाहिए, थोड़ा सा पुश आ गया तो आपको बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी, बट बिकॉज द ग्लोबल क्यूज, द ग्लोबल मार्केट्स, दे आर नॉट सपोर्टिंग एंड दे आर देमसेल्फ लुकिंग लिटिल शेकी, तो कहीं यहाँ से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए, सिर्फ वो एक कंसर्न है। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड the index from tomorrow's perspective and also Monday's perspective. So that's all I have. I can take few stocks and then we can wind up the session. Sir, Nifty daily showing death cross. Is it required to give some weightage to this scenario? See, generally, death cross produces a counter move for the first time. So, if there is a death cross and the price is far away from that, either on the upside or lower side, it produces a mean reversion. So these concepts, they don't work in the way they are given in the books. And also these concepts don't follow these bookish concepts. You should know how the markets have evolved over the last 30-40 years and how these things work in the practical market, and all such things we discuss in the training that is scheduled on July 10th. Don't miss this training, honestly. If you are seriously looking for some serious stuff, definitely join kariye and start your journey. So it's a journey, it's not a one day affair, it's a journey. जो बंदे मेरे साथ 3 महीने 6 महीने से हैं, आप उनसे पूछिए। आईसीआईसीआई बैंक, ओके, सी बैंक इंडिविजुअल स्टॉक्स पे मेरा कोई व्यू नहीं है अभी तक, क्योंकि मार्केट जो है अभी भी शेकी है। ओके, सो यू कैन सी इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड इस वक्त नहीं होना है। आईसीआईसीआई बैंक एक बड़े बेरिश ट्राइंगल में है एंड देर इज अ बिग रेंज दैट इज गोइंग ऑन, देर इज अ गैप ऑल्सो, देर इज लॉट ऑफ मूविंग एवरेजेस, सो ये बहुत ही मेस्ड अप सिचुएशन में। ओके, सो ट्राई टू एग्जिट इफ यू गेट सम प्रॉफिट, एक बार निकलो इसमें से, क्योंकि क्लीन एंड क्लियर सेटअप्स आपको ट्रेड करने हैं। आप अगर इतने जम्बल्ड अप सिचुएशंस को ट्रेड करोगे, वो भी ऐसे मार्केट में, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो आईसीआईसीआई बैंक, इफ इट गोज हायर, एक बार इसमें से एग्जिट करना सही है। ट्रेंडिंग मूव कब आएगा? या तो इसके बाहर, या तो इसके ऊपर, या तो इसके नीचे। ओके, टिल देन इट्स ऑल चॉपी। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, रिलायंस। सो रिलायंस में हाउ मेनी पीपल रिमेंबर 2440 प्रिसाइसली इस लेवल की जो है बात हुई थी अपनी, और आज का जो बॉटम है दैट इज 2440। सो व्हाई आई वाज बेरिश ऑन रिलायंस, व्हाई आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस लेवल टू कम, वेरी इजी, 233 मूविंग एवरेज। लास्ट टाइम मैंने 2740 पे टॉप बोला था, और ये 2840 से गिर गया, एंड देन इट स्टार्टेड टू मूव डाउन। सो राइट नाउ रिलायंस पे some technical pullback can come. I would not like to go and buy the first test of the 233 moving average. No, certainly not, and certainly I will not buy Reliance on Friday. So what I would like to see is next couple of days of price action. अगर मुझे रिलायंस यहाँ पे इस सिचुएशन में एक अच्छा सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है, इट कंसोलिडेट्स फॉर कपल ऑफ सेशन एंड देन स्टार्ट्स टू गो हायर, तो मैं रिलायंस को यहाँ पे बाय करूंगा दोस्तों, और ये इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे, या प्रेफरेबली ये स्विंग बॉटम को स्टॉप लॉस लगा देंगे, एंड देन अगेन हम टारगेट करेंगे टुवर्ड्स 2800 एंड पॉसिबली टुवर्ड्स 2900 ऑल्सो। सो ठीक है, प्रिपरेशन है बाइंग की, बट आई थिंक थोड़ा सा रुक जाते हैं। लेट्स वेट, लेट्स नॉट रश इनटू बाइंग, we will get our chances. If the market certainly, see, if this market has to certainly rally, then don't think that a rally of small proportion will come. No, if this market has to rally, it will either, you know it will either not rally, or if it starts to rally, then it will go all the way till 17,750, 17,800. There's no denying in that. और ये क्यों मैं कह रहा हूँ? Because of some psychological reason I'm telling this. So you have a very big scope in the market, so don't rush. uh, Next है भारती एयरटेल। कि भारती एयरटेल, आई वाज हाईली बेरिश फॉर 620 एज अ टारगेट, ठीक है।
और आप देखिए 635 का इसमें जो है एक लो हुआ है, अभी ये और गिरेगा. So those of you who follow regularly, if you remember, since so many months I was bearish on Bharti Airtel. Simple reason है दोस्तों, breakout failure है. These are simple price action concepts which every trader must learn. So this is a breakout failure of this resistance, and इसका पहला जो टारगेट था वो यहाँ पे था, and it broke through that. तो नेक्स्ट टारगेट जो है आपका प्रीवियस हाई हो जाएगा which is 620. सो भारतीय एयरटेल में एनी अप मूव दैट कम्स, इट्स अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. आपको 680 जो है 680, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू गो शॉर्ट. स्टॉप लॉस आपको 700 रखना होगा, टारगेट 620, नथिंग लेस देन दैट. सो you can draw a resistance, you can draw a channel also. Probably that should help you in dealing with Bharti Airtel. Okay, don't short at lower levels because you always run a risk of getting bear trapped. So don't short इसको भाई 630 पे मत शॉर्ट करना ये बोल के कि आपने 620 बोला था. यूज सम कॉमन सेंस. ओके, so you have to short on rallies, you have to short on bounce. So 680 690, these are very good places to go short. स्टॉप लॉस के तौर पे हम 700 को रख सकते हैं, एंड वी कैन एक्सपेक्ट 620 बेयर मिनिमम. ठीक है, सो ये व्यू है. डाबर की बात कर लेते हैं. तो डाबर वगैरह जो है, मुझे तो कुछ खास ये सब स्टॉक्स लगते नहीं है. लेट मी सी. सो देखो, डाबर में वही बेरिशनेस चल रहा है पिछले कई महीनों से, जो है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं. यू नो, सो पैथेटिक काउंटर है, पुअर चार्ट स्ट्रक्चर है. सो क्या कर रहा है, कुछ नहीं है इसमें. कितना भी बाउंस करे, जब तक ये हमारे मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करेगा, इट विल कीप गोइंग लोअर. सो नहीं, वेरी रेयरली आज की डेट में आपको अच्छे स्टॉक मिलेंगे. या इट इज द टाइम टू प्ले इंडेक्स. करेक्ट, करेक्ट. बहुत ही सिंपल सी बात है कि दिस इज द टाइम टू प्ले इंडेक्स. एंड मे बी अगर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में हमारे इंडेक्स जो है मेजर एक रेजिस्टेंस को टेक आउट करते हैं, तब तक जो है चार्ट्स इंप्रूव होंगे. हमें मेहनत करना होगा इस बार अच्छे चार्ट्स खोजने में, बिकॉज 90% ऑफ द चार्ट दैट आई सी, दे आर प्योर गार्बेज. पूरी तरीके से जो है बकवास चार्ट्स है. सो हमें चार्ट्स खोजने पड़ेंगे. टाटा स्टील, देखो टाटा स्टील, इनकी सबकी धज्जियां उड़ चुकी हैं. आप देख लो, स्टॉक पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है. सो इसमें सेकंड ब्रेकडाउन जो है यहाँ से हुआ 970. इट ब्रोक विद अ गैप डाउन. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. ये मैंने बहुत बार आपको यूट्यूब पे बताया भी है कि जब भी कोई अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, जैसे ये डबल बॉटम है. ओके, सो ऑन दिस डे, इफ यू लुक ऑन दिस डे, इट्स अ डबल बॉटम. ये पिछला बॉटम है, ये दूसरा बॉटम है. ओके, एंड स्टॉक इज इन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड. सो कभी भी ऐसे सिचुएशंस में बाय नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि ये गैप डाउन से ब्रेक होने का चांसेस होता है. एंड सपोज आपने बाय किया और आपने अगले दिन देखा कि ये गैप डाउन से ब्रेक हो चुका है, दिस इज द प्लेस टू एग्जिट. और यहाँ पे जो है ना, आपको एक शॉर्ट इनिशिएट करना है विद प्रीवियस डे हाई एज अ स्टॉप लॉस. दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन दीज ट्रेनिंग्स. such simple, beautiful and very very critical setups. नाउ ऐसे हर सिचुएशन में जब भी गैप डाउन से बाजार डबल बॉटम या डबल टॉप वगैरह ब्रेक करता है, इसको ब्रेकअवे गैप बोलते हैं. यहाँ पे कभी भी आपको लॉन्ग नहीं करना है. दिस इज द श्योर शॉर्ट प्लेस टू गो शॉर्ट. तो टाटा स्टील ने सबसे पहले इस ह्यूज सपोर्ट एरिया को अगर आप देखें, तो यहाँ भी एक गैप डाउन से हुआ था ब्रेक. अगेन देयर इज अ, दिस शोज दैट देयर इज अ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग. इट्स नॉट अ, द रिटेल्स आर वेरी वेरी ट्रैप इन टाटा स्टील. एंड इफ यू हैव बीन फॉलोइंग अस, आपको याद होगा कि हमने जब ये डिक्लाइन, ये जब लेग हो गया था, तब से मैं वार्न कर रहा हूँ कि इसको मत टच करना. Okay, because it's a very dodgy counter. It can go all the way again till 1160, but it has broken this support very very badly. So there will be a follow through selling. Now see, Tata Steel doesn't has any support all the way till 766. यानी ये स्टॉक 10% तो अभी बेयर मिनिमम गिरेगा. ठीक है, 10% तो बेयर मिनिमम ये स्टॉक गिरेगा. सो इसमें ना फंसे, ऐसे चीज़ों को समझें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स में वही चीज़ें रिपीट होती हैं, नया कुछ नहीं होता. अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड की बात करें, अगेन ऑटो पैक वाला स्टॉक है.
and the stock is at resistance. So बॉस मेरा सिंपल फंडा है, रेजिस्टेंस पे बुक करो और सपोर्ट पे बाय करो अगर लॉन्ग साइड प्ले करना है. So यहाँ पे there is no incentive to remain long. And if you are banking too much on a breakout फलाना ढिमका, then all the best, because this market जहाँ पे इंडेक्स ही ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, I don't wish to bank too much on this sort of analysis. Yes, it can work, there's no denying, बट स्टिल यहाँ पे जो है ट्रबल एरियाज होते हैं. सो आप इसमें से निकल जाइए. 144, 145 वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. एंड एनी विच वेज वी नेवर प्ले फॉर सच स्मॉल बफर. वी ऑलवेज लुक टू प्ले at situations where you have a margin of safety, you have low risk, and you have a greater potential to capitalize, none of which is offered by this stock. So right now इस स्टॉक में मेरी तो एग्जिट की सलाह होगी. आप कोई भी अपमूव आता है, अपमूव नहीं भी आए, एक बार निकल जाओ, because next time you have a good opportunity to buy this stock at 110. 110 पे अच्छी बाइंग इसमें हम कर सकते हैं, तो बीच में क्यों फंसना, राइट. 110 से 150 के रेंज में हमें 140 पे क्यों फंसना है. अगर हम यहाँ बाय करेंगे तो एटलीस्ट हमारे हमारे पास जो है 50 पॉइंट का स्कोप तो है अपसाइड जाने के लिए. सो ये चीज़ है. हमेशा जो है थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, थोड़ा इन कॉमन सेंस के एंगल से भी सोचना बहुत ज़रूरी है मार्केट में. टीसीएस, ओके. सो आईटी पैक में थोड़ा सा एक रिबाउंड जो है आया है, एंड आई लाइक द वे टीसीएस हैज बाउंस्ड. बट अगेन ऑल दिस इज पार्ट ऑफ अ बेयर मार्केट. टीसीएस जो है अपना अनफिल्ड गैप है 3350 पे, इसे कल मोस्टली कंप्लीट करेगा. अपसाइड में 3466 तक ये स्टॉक जा सकता है, बट ध्यान रखना है कि दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द downtrending rallies that we often see when markets are under bear grip. So यहाँ पे हमें जो है ना, don't become bullish in the wrong stock at the wrong price. So these are all supply zones. You can see it is filled with supplies 3466 तक. Try to exit any of your positions that was stuck. Now this entire structure is looking expanding wedge to me, which suggests there must be a second round of drop. And this drop, if makes a lower low, if it makes a lower low and starts to rally, then probably I would be interested to take a long trade in TCS. ओके. सो एज ऑफ नाउ 3466 तक का स्कोप है, हमें वहां पे निकल जाना है, पुराने पोजीशंस को एग्जिट करना है, और फिर हम फ्रेश पोजीशंस को देखेंगे. अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो. ओके, 3466 ये बहुत ही सॉलिड जोन है. शॉर्ट अगर आप करोगे तो आपको 100 पॉइंट का एसएल रखना होगा. 3556 ये आपका लगभग एक स्टॉप लॉस होगा, एंड टारगेट के तौर पे बेयर मिनिमम 3100 ये आपका टारगेट होगा. ठीक है. सो मैंने इसमें दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दी है. टीसीएस. नेक्स्ट है वेदांता, एंड वी विल वाइंड अप दी सेशन आफ्टर टेकिंग कपल ऑफ क्वेरीज. तो वेदांता देखिए कोई होप नहीं है. these stocks have broken very badly, and this is why it is important to watch the live session. अगर आप लाइव सेशन देखेंगे तो you remain in touch with the markets on daily basis. So वेदांता में दोस्त कोई होप नहीं है. if you see वेदांता पे हम कितना बुलिश थे लास्ट टाइम, and why we were bullish is because if you look at the long term chart, Vedanta was moving in a very very strong and great manner. So हमने इसमें बहुत सारे ट्रेड्स, काफी राउंड्स जो है हमने इस चैनल में हमने इसमें कैपिटलाइज किए. बट देन ओवर हियर एट चैनल रेजिस्टेंस, मैंने जब आपसे कहा कि बुकिंग कर लो और वेट करो करेक्शन का, तो द वे इट स्टार्टेड टू ड्रॉप, देयर वाज नो रिवर्सल. लाइक जिन्होंने भी हमारी ट्रेनिंग अटेंड की है, दे नाउ नो वेरी वेल कि हमारा एक काम करने का एक मेथड है. ठीक है. तो उस मेथड के हिसाब से स्टॉक को पहले एक अच्छे जगह पे आना है और फिर रिवर्सल देना है. अब रिवर्सल इसमें नहीं आया, एंड इंस्टेड नेक्स्ट वीकली कैंडल में इट ब्रोक ऑल दीज सपोर्ट्स. दैट्स इट, दैट वाज द एंड गेम. क्योंकि फिर आप उसके नीचे तो आप रेजिस्टेंस के नीचे आप आ गए, लाइक यू वेदांता ब्रोक द लास्ट पीस ऑफ सपोर्ट. सो नाउ एनी मूव दैट कम्स इट विल बी मेट विद सेलिंग, एंड वही चीज इसमें हुआ. अभी अगर आप देखेंगे तो वेदांता में अभी और बहुत डाउन साइड है. वेदांता में कोई सपोर्ट नहीं है भैया. 175 तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है. ओके. सो एटलीस्ट 190, 20-30 रुपया तो और वेदांता गिरना चाहिए. कृपया ऐसे स्टॉक्स को बाय ना करें. मैं बहुत महीनों से, अक्टूबर 2021 से बेयर मार्केट को कॉल कर रहा हूँ.
not only in India but in all the markets, and the rest is history. So ऐसे stocks पे ना फंसे, because while index can move say 10%, stock can move 50%. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बजाज फाइनेंस अभी लॉन्ग नहीं है, बजाज फाइनेंस में अभी लॉन्ग मेरी तरफ से नहीं है, बट भविष्य में ये, अगर जैसा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, इट इज एट अ वेरी नाइस चैनल सपोर्ट. ठीक है, इसमें कोई डिनाइंग नहीं है. अब ये आपका प्रीवियस बॉटम है, जिसको आपने देखो अभी गैप डाउन से ब्रेक किया. अभी मैं टाटा स्टील के एग्जांपल में गैप डाउन वाली कॉन्सेप्ट बता रहा था. सो एनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेकन आउट विद अ गैप डाउन calls for a bearish move till you do not launch yourself above that gap. So बजाज फाइनेंस में हालात अभी भी कुछ खास नहीं है. ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक एक बार छलांग लगा दे इस तरीके से. ठीक है, एक बार स्टॉक जो है 5760 वगैरह एक बार इस स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाए, तो फिर वीकली चार्ट्स इंप्रूव हो जाएंगी, एंड दैट विल गिव अस कन्विक्शन कि सारे डिप पे जो भी डिप आती हैं, और ये फिर हमारा सपोर्ट बन जाएगा. सो रेजिस्टेंस विल टर्न इनटू सपोर्ट. सो वी विल लुक टू बाय द डिप्स नियर 5500 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस फॉर अ कंटिन्यूएशन मूव. ओके, और कंटिन्यूएशन अगर होगा तो कम से कम 6500 तक होगा. ये चीज आप लिख के रख सकते हैं. बजाज फाइनेंस में कोई भी लॉन्ग अगर मटेरियलाइज होता है तो कम से कम 6500 जाएगा बेयर मिनिमम. प्रिफरेबली ये उससे भी ऊपर 6800 यहां तक भी जाएगा, बट 6500 मिनिमम है. यू कैन टेक द फोटो ऑफ दिस एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस इन कमिंग डेज. सो अच्छा स्टॉक है, बट अभी वेट करना होगा. somebody is asking, can we buy nifty b's at current? Yeah, you can buy if your long term vision is to buy nifty b's. मुथूट फाइनेंस की तरफ चलते हैं दोस्तों. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल दोस हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द ट्रेनिंग, फटाफट आप जुड़ जाइए. मुथूट फाइनेंस देखो सेक्युलर बेयर मार्केट में है स्टॉक, कोई भी इसमें मतलब डाउट क्यों है आपको? पूरी तरीके से बेरिश है, पूरी तरीके से. ठीक है, सो व्हाई द क्वेश्चन? कोई ट्रेड नहीं है स्टॉक में. एशियन पेंट्स की बात करते हैं. सो पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ एशियन पेंट्स, एंड लेट इट मूव हाइयर. सेकेंड राउंड में हम इसे देखेंगे. अभी की प्राइस एक्शन मुझे तो अच्छी लग रही है कि दैट अगेन इट इज लॉन्चिंग इटसेल्फ, बट इट्स टू अर्ली. यू हैव fairly strong resistances at 2800 2850. Okay, so don't forget that the previous all-time high, this was once upon a time it was all-time high, that became a support, that here it was ruptured, and then it is now comfortably trading. So this will be 2850 2800 your strong resistance now. Okay, so it's too early days. Overall I think अगर बाजार fresh round of bearishness नहीं होगा तो this stock will probably it will try to uh, you know become bullish later on. Abhi more or less the charts that I can see, they are more or less support resistance game. IRCTC ये सारे स्टॉक खत्म हो चुके हैं. IRCTC, IEX, CDSL, CAMS, these ये सारे स्टॉक्स पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा है, इनमें पैसा मत डालो. मारुति मारुति सुजुकी सी 8300 का रेजिस्टेंस मारुति सुजुकी पे बहुत स्ट्रांग था. मैंने तो कहा था निकल जाने के लिए, और आज इसने आफ्टर सो मेनी डेज ऑफ रेजिस्टिंग इट हैज ब्रोकन हायर, स्टिल नॉट क्रॉसिंग दी 8300. मेरी ये एडवाइस होगी इस स्टॉक में, depending on like where you have bought, still I would suggest कि it will pay off, it is safe to exit for once. Okay, you have very strong resistances in this zone, horizontal wise, trend line wise. तो अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ तो ये वापस से बैक टू पेविलियन आ जाएगा. ठीक है, सो अगर आप प्रॉफिट्स में हो तो मेरी ये सजेशन होगी कि एक बार इसमें से निकल जाए और इसको छोड़ दें. अब दो चीजें होंगी, या तो स्टॉक और कंटिन्यू करेगा. अगर ये स्टॉक कंटिन्यू करता है तो हमें ये जो मैसेज है स्टॉक का, that it has turned bullish from these two candles, this message will help us to trade Maruti in near future, not today or tomorrow but in near future. So in that case हम जो है
बड़े कंफर्टेबल तरीके से फ्यूचर में इसे ट्रेड हम कर सकते हैं। ओके, विच आई विल एक्सप्लेन लेटर। फिलहाल मेरे ख्याल से 8300 का मेरा रेजिस्टेंस काफ़ी दिनों से ये वर्क कर रहा है। आई विल गो विद दैट रेजिस्टेंस टू बुक आउट, एग्जिट करे, ठीक है, शॉर्ट मत करना, एग्जिट करो, ठीक है, एंड स्टे असाइड। यू आर गोइंग टू सी सम सुपर डुपर थिंग्स कमिंग इन मारुति। सी मारुति में एक चीज़ हमें समझना होगा, वी गॉट अ शार्प क्रैश, ठीक है, एंड सिंस देन वी आर रोटेटिंग इनसाइड दिस, ठीक है। सो समवेयर डाउन द लाइन क्या होगा कि ये it will go like this, and somewhere down the line it will again make a round downturn, okay, to complete this entire structure H pattern, to complete this entire structure like this, and then that will be the greatest time to buy मारुति। मैं इसी चीज के फिराक में वेट कर रहा हूँ कि इसमें एक बड़ा ट्रेड लिया जाए जो कम से कम 2-3 हज़ार 4,000 पॉइंट की ट्रेड हो। छोटे मोटे ट्रेड्स के लिए इसमें इंटरेस्टिंग है मेरे को। नाउ इफ दिस डजंट हैपन, अगर ये इस तरीके से ऐसे नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन है कि इट गोज ऑन टू मेक अ न्यू हाई। नाउ दैट इन माय व्यू विल इनवाइट मोर ट्रबल टू मारुति, बिकॉज बॉटमिंग स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। सो दैट विल बी वेरी रिस्की। इनफैक्ट ऐसा सिचुएशन अगर होगा तो शायद मैं इसे ना शॉर्ट करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सो लेट अस सी। अभी ये पूरी तरीके से बीच में है, सो इट्स बेटर टू एग्जिट। Okay, so we have reached the 1 hour limit, and I've also reached my limit. So let us take a couple of queries and then wind up हम कर देते हैं। बजाज ऑटो, देखो बजाज ऑटो में लास्ट टाइम 3600 पे आएगा तो बाय करने को कहा था। सो अगर आपने बाय किया है तो ठीक है, होल्ड करें इसको, ट्रेल टू कॉस्ट या जस्ट पुट इट अंडर 3600, होप फॉर द बेस्ट। एंड इफ इट टेक्स आउट 4000 तो फिर इट इज गोइंग ऑल द वे टिल 4400। सो थोड़ा सा मेस्ड अप है, चॉपी है। अगर आपने नीचे बाई किया तो यू हैव मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यू कैन ट्रेड, बट ओवरऑल 3600 से 4000 के रेंज में ही ये स्टॉक चलने वाला है। BHEL की बात करें तो स्टॉक देखो बेरिश है। अभी थोड़े दिन पहले भी इसको डिस्कस किया है हमने कि 44 वाला जो लेवल है ये टूटेगा। सो वी हैव एंटर्ड इनटू सम डिमांड जोन, बट नो, द स्टॉक इज स्टिल बेरिश। हम डिमांड जोन पे बाय नहीं करते, अगर ट्रेंड चेंज होगा तब बाय करेंगे। हीरो मोटो, अगेन ऑटो पैक स्टॉक, हीरो मोटो कॉप। हीरो मोटो की बात करें तो अगेन इट्स मूविंग हाइयर विद अ बिग वॉल्यूम, बिग कैंडल। हालांकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। आप स्टॉक को एग्जिट कर सकते हैं, ओके, ऑन एनी रैली यू कैन ट्राई टू एग्जिट दिस स्टॉक वंस। ये स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक बनेगा आने वाले 1 महीने के टाइम पे, ठीक है। बिरला सॉफ्ट इज द नेक्स्ट क्वेरी, थोड़ा सा हम फास्ट लेंगे। बिरला सॉफ्ट दोस्तों ये बेरिश काउंटर है, एंड एनी मूव दैट कम्स इट विल फेस रेजिस्टेंस एट 400, 390, 400 जोन। सो स्टॉक पूरी तरीके से बेरिश है। ओके, आफ्टर अप मूव यू विल अगेन सी लोअर लेवल्स ऑफ 260 कमिंग इन दिस स्टॉक। टाटा मोटर्स की बात करते हैं, लेट मी सी टाटा मोटर्स। So Tata Motors, see Tata Motors is now very very dodgy. That is why I'm away from this stock, because if you look this entire structure, ये कुछ क्लैरिटी नहीं देता है, एंड प्लस यू हैव अ वेरी ह्यूज सपोर्ट। सो द प्रॉब्लम इज you have a very huge support, as in this was a resistance, so now it should act as a support, and just above the support you have multiple supports एंड यू हैव मल्टीपल रेजिस्टेंसेस। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है ना कि इसे छोड़ दो, ये समय के साथ खुद ही अपने आप को रिजॉल्व करेगा एक बहुत ही शानदार ट्रेड के तौर पे, ठीक है। अभी के लिए अगर टाटा मोटर्स में इमीडिएटली मुझे कहना हो तो टाटा मोटर्स अभी थोड़ा सा बेरिश है। जब तक कि ये स्टॉक 425 को क्रॉस नहीं करता है, ये स्टॉक ताकत रखता है एक और बार गिरावट करने की, एंड 350 360 कैन कम। इसमें बहुत ज्यादा नीचे चेस नहीं करना, क्योंकि दो चीजें होंगी। अगर ये स्टॉक वाकई में बेरिश है तो ये अभी और यहाँ पे आपको पकाएगा, एंड देन इफ इट ड्रॉप्स इट विल आइदर ड्रॉप इन अ वेरी बिग मैनर लाइक दिस, or it will drop slowly and again bounce back, to tease out the shorters. So it's a messed up situation. 425, that is the last stop loss for shorting. ट्राइडेंट, कोई पूछ रहा है ट्राइडेंट, ऐसे स्टॉक को नहीं ट्रेड करते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। ये सब स्टॉक से निकल जाओ, दीज आर ऑल प्रॉब्लमेटिक स्टॉक्स, ठीक है, इससे आप निकल जाइए।
आखिरी स्टॉक लेते हैं आई टी आई लिमिटेड, देन ओके, सो बिग कैंडल, बिग वॉल्यूम, आप सबको पता है ऐसे केस में मैं एग्जिट करने बोलता हूँ, सो यू कैन एग्जिट फॉर नाउ। ठीक है, दैट्स ऑल। सो लेट्स फाइंड अप आज का सेशन हालांकि होना नहीं था, बट फिर भी वी आर एबल टू डू दिस लाइव सेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब अगला जो लाइव सेशन है ये होगा संडे को। ठीक है, सो दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि नेक्स्ट वीक दोस्तों बहुत ही क्रूशियल है। हाफ ईयरली क्लोजिंग है, जून एक्सपायरी है, क्वार्टरली क्लोजिंग है। सो नेक्स्ट वीक के लिए हमें पूरी तरीके से रेडी होना पड़ेगा संडे को, नहीं तो मामला जो है गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। एंड ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दी ट्रेनिंग, जुलाई 10th की ट्रेनिंग के लिए आप फटाफट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू विल बी एडेड इन अवर टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो सेशन। गुड नाइट, जय माता दी।